Now we'll start the problems on dividend policy. So already problems are in your attachment. Hope you got the hard copy printout of these problems. So we are going to start the problems. First problem. See the problem number 1. The earnings per share EPS of a company are rupees 16. Market rate of discount applicable to the company is 12.5%. And retained earnings can be employed to yield a return of 10%. The company is considering a payout. Payout का मतलब dividend payout. The payout ratio of 25%, 50%, 75%. Which of these would maximize the wealth of shareholders? जहां पर market price per share ज्यादा होगा, वहां पर wealth of shareholders will get maximized. So in other words, we have to find out in which option we will have highest market price per share. In this problem, EPS is given, earnings per share is given, that is 16 rupees. KE stands for cost of capital. Here cost of capitalization is given, the market rate of discount applicable to the company is 12.5%. 12.5% means 0.125. ये percentage में है, इसको fraction में लाने के लिए 12.5 divided by 100. 12.5 divided by 100, you will get 0.125. And retained earnings can be employed to yield a return of 10%. So retained earnings can be used to earn a return of 10%. This is the internal rate of return. So IRR, internal rate of return is 10%. Payout ratios. Dividend payout ratios are 25%, 50%, 70%. So whatever is given in the problem, we have written here. Right? Now we have to, according to Walter's formula, the market price per share. Remember this formula in the coming problems. Every problem you have to apply this formula. Only one formula is given by Walter. So P is equal to D plus R by KE into E minus D divided by KE, where P stands for market price. This we have to find out. R stands for internal rate of return, the return which a company earns on its investment. KE stands for cost of capital. E stands for earnings per share and D stands for dividend per share. Right? Now we will apply all these values in this formula to get the market price of share. First case. When the dividend payment ratio is 25%. First case, when the dividend payment ratio is 25%. So dividend D is equal to 25% of EPS. जब DP ratio 25% दिया, तो किस चीज का 25% लेंगे? Earnings का. जो कंपनी अर्न कर रही है उसका 25% डिविडेंड पे कर रही, तो कंपनी का अर्निंग्स कितना है? 16 रुपये. एक शेयर के ऊपर कंपनी 16 रुपये अर्न कर रही और उसका 25% डिविडेंड पे कर रही. तो 16 रुपीस का 25% इट कम्स टू 4 रुपीस. तो 4 रुपीस इज द डिविडेंड पर शेयर. 4 रुपीस इज द डिविडेंड पर शेयर. तो अब ये डी की जगह पे 4 लिखेंगे. इन प्लेस ऑफ डी वी राइट डाउन 4. R is equal to 10%, 0.10. KE is equal to 12.5, 0.125. E is equal to earning per share, 16. And D is equal to 4. Divided by KE. KE is 0.125. तो इसको solve करने का method, I will show you the method. Within short steps, you can be able to get the answer. We have to go rolling back method. Rolling back method means from right side to left side. From this side to this side will go on calculating. For example, in the bracket you can say 16 minus 4. So what I am taking on the calculator, 16 minus 4 is equal to, we got 12. Now multiply this 12 with 0.1. Yeah, numerator में 0.1 है, तो 12 into 0.1 divided by 0.125. This divide 0.125. यहां तक हो गया. plus 4 is equal to numerator पूरा हो गया. Now denominator 0.125 divided by 0.125. You will get 108.8. You will get 108.8. Again, I'll explain you how to make the calculations. From right side go back to left side. तो 16 minus 4 पहले कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे, डिवाइड 0.125 से करेंगे, प्लस 4 करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 0.125 करेंगे. तो एक ही स्ट्रोक में, इन वन स्ट्रोक इटसेल्फ यू विल गेट द आंसर. नो नीड टू डू फॉर इन 2, 3 steps, 4 steps. Unnecessary, don't waste the time.
In one step, we can get the complete answer by following my procedure. So we got 108.8 is the market price. ये market price कब आ रहा? When DP ratio is 25%. Second case when DP ratio is 50%. अगर dividend payment ratio 50% रह गया तो क्या होगा? तो D is equal to 50% of EPS. तो 50% of 16 rupees, 8 rupees. यहाँ पर dividend 4 rupees लिए थे, यहाँ पर dividend 8 rupees. Now P is equal to 8 plus 0.1 divided by 0.125 into 16 minus 8. यही फॉर्मूला है, खाली डिविडेंड को चेंज कर दिए. डी यहाँ पर 4 था, यहाँ पर डी को 8 बना दिए. ये 0.1 by 0.125 सेम है और 16 minus 4 था, 16 minus 8 डिवाइड बाय 0.125. अगेन रिवर्स बैक कैलकुलेशंस. कैसा रिवर्स बैक कैलकुलेशंस? 16 minus 8, 16 minus 8 ये ब्रैकेट में कर दिए into 0.1 divided by 0.125 plus 8 is equal to आ गया divided by 0.125. ये कर दिया 115.2. We got the answer 115.2. Similarly, when DP ratio is 75%, तो dividend is 75% of 16 rupees. 16 rupees का 75% 12 rupees. अब D के प्लेस पर 12 ले लेंगे. 12 plus 0.10 divided by 0.125 into 16 minus 12 by 0.125. 121.6. Completed. Answer completed. It is asking you to find out the market price per share when the DP ratio is 25%, 50%, 70. ये तीन केसेस में मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होगा? तो पहले जब DP रेशियो 25% करे थे तो 108.8 और उसको बढ़ा के 50% कर दिए थे तो 115.2. जब और बढ़ा दिए 75% कर दिए तो और बढ़ गया तो 108 से 115, 115 से 121 तो बढ़ते जा रहा. इसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, इफ ए कंपनी इज अ डिक्लाइनिंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म कब कहेंगे? व्हेन R इज लेस देन K. व्हेन R इज लेस देन K. यहां R का वैल्यू 10% ही है और KE का वैल्यू 12.5% है. तो बताइए ये फर्म ग्रोथ फर्म है या डिक्लाइनिंग फर्म है? इट इज अ डिक्लाइनिंग फर्म बिकॉज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये डिक्लाइनिंग फर्म है तो इसका ऑप्टिमम डीपी रेशियो 100% होना चाहिए. जब 100% डीपी रेशियो रहेगा तो इसका मार्केट प्राइस ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा. तो जैसा ऐसा डीपी रेशियो बढ़ाते जाएंगे उतना मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा. यहाँ पर डीपी रेशियो 25% था तो इतना था, बढ़ा के 50% कर दिए तो और बढ़ गया, 75% करें तो और बढ़ गया, 100% करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 121 से भी बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा डीपी रेशियो रहेगा उतना ज्यादा मार्केट प्राइस बढ़ेगा. कौन सी कंपनी के लिए? डिक्लाइनिंग फर्म के लिए. राइट, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. प्रॉब्लम ये सब नहीं पूछ रहा है, प्रॉब्लम है खाली कैलकुलेट करो बता रहा है. वी हैव कैलकुलेट फॉर योर इंफॉर्मेशन. आई एम एक्सप्लेनिंग. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ सेकंड प्रॉब्लम. द अर्निंग्स पर शेयर EPS ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ऑफ PQR लिमिटेड आर 20. एक कंपनी का फेस वैल्यू XYZ का PQR कंपनी है, उसके फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीस है, लेकिन उसके ऊपर अर्निंग्स पर शेयर हमको फेस वैल्यू नहीं चाहिए. वी डोंट रिक्वायर द फेस वैल्यू, वी नीड द अर्निंग्स. तो शेयर के ऊपर अर्निंग 20 रुपये है तो अर्निंग्स पर शेयर इज 20 रुपीज. देन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 25%. तो R इज इक्वल टू 25%. तो 25% का मतलब 25/100 तो it comes to 0.25. And capitalization of risk class is 12.5%. This is cost of capital. K is equal to 12.5% or 0.125. हो गया? According to Walter, the approach, the market price per share is P is equal to D plus R by K, E minus D by K. Same formula अभी जो first problem apply. Now first question. What would be the market price per share if the payout ratio is 0? अगर payout ratio 0 अगर रहेगा, DP ratio 0 है तो market price क्या होगा? पहला question. Market price per share, MPS stands for market price per share is how much? When DP ratio is 0%. तो D is equal to 0. तो P is equal to 0 plus D की जगह पे 0 ले लेंगे और R 0.25 है, K 0.125 है, यहाँ पर दे दिया 20 minus 0 डिवाइड बाय 0. रिवर्स बैक मेथड से कैलकुलेट करो. P 320. पहला आंसर आ गया. The market price per share is 320 rupees when the DP ratio is 0. Second question, what should be the optimum payout ratio?
ये कंपनी के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? तो उसके लिए थ्योरी एक्सप्लेनेशन आपके दे रहा हूं. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, द फर्म इज अ ग्रोथ फर्म. अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं. इफ आर इज ग्रेटर देन के ई, द फर्म इज कॉल्ड ए ग्रोथ फर्म. और ग्रोथ फर्म के लिए वॉल्टर ये कह रहा है कि द ऑप्टिमम डीपी रेशियो इज 0%. अगर कोई ग्रोथ फर्म है तो उसका ऑप्टिमम डीपी रेशियो 0%. ये कंपनी डिविडेंड नहीं देना, क्योंकि कंपनी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है. कंपनी जो अर्न कर रही 25% अर्न कर रही, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%. तो कंपनीज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर, सो कंपनी शुड नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड. द ऑप्टिमम डीपी रेशियो इज 0%. In the present case, R is greater than KE, so the optimum DP ratio is 0%. In that case, the market price per share is 320. Second question complete. Take a pause of this screen and copy down the complete solution. Now, C point. Second problem, C point. The C point it is asking you, suppose the company has a payout ratio of 25%. So, DP ratio is equal to 25%. So, D is equal to 25% of rupees 20. Then what would be the price of the share? So we apply the formula 5 plus 0.25 divided by 0.125, 20 minus 5 divided by 0.125. So P is equal to, अगर DP ratio 25% है तो फिर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा? It will become 280. Now see the third problem, problem number 3. The EPS of a company is rupees 8. Problem number 3. EPS is equal to rupees 8 and the rate of capitalization applicable to the company is KE 10%, and the company has before an option of adopting the payment ratio of 25%. So DP ratio is equal to 25%. Using the Walters formula of dividend payout, compute the market price of the company's share if the productivity of retained earnings are This is the complete information given in the problem. E is equal to 8 rupees. Earning per share. Cost of capital 10%. DP ratio 25%. R internal rate of return 15%. According to Walters formula, the price per share is D is equal to 25% of EPS. For 2 rupees. 2 plus R is 0.15. KE is 0.10. E earnings per share is 8 minus 2 divided by 0.12. Market price per share is rupees 110. That's it. Straightforward problem. So market price per share is 110. Now see the problem number 4. From the following information supplied to you,
Determine the theoretical value of equity share of a company as per Walter's model. So we have to calculate MPS, market price per share, according to Walter. Earnings are 5 lakh rupees. Dividend paid is 3 lakh rupees. Number of shares outstanding is 1 lakh. तो 5 लाख रुपया टोटल अर्निंग है और 5 लाख में से डिविडेंड पे करे 3 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आर 1 लाख. बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट ईपीएस. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 4. EPS is equal to total earnings divided by total number of shares. That is equal to rupees 5 lakh divided by 1 lakh shares. Rupees 5. DPS, dividend per share, is equal to total dividend paid divided by number of shares. Dividend paid are 3 lakh. Number of shares are 1 lakh. Is equal to rupees 3. तो 5 रुपीज पर शेयर इज द EPS. एक शेयर के ऊपर अर्निंग 5 रुपये है और एक शेयर के ऊपर डिविडेंड जो पे करे 3 रुपीज है. Therefore, present DP ratio. DPS by EPS into 100. That is equal to 3 by 5. कंपनी का डिविडेंड पेमेंट रेशो 60%. 3 by 5 into 100. It comes to 60% present DP ratio. Now cost of capital KE. KE is 12.5%, 0.125, and rate of return on investment R is equal to 15%, 0.15. It is asking you, are you satisfied with the dividend policy of the firm? प्रेजेंटली कंपनी जो डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करी है वो पॉलिसी सैटिस्फैक्टरी है या नहीं है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रेजेंटली द कंपनी हैज मेड अ पॉलिसी ऑफ पेइंग 60% डिविडेंड. कंपनी 60% डिविडेंड पे करी, ये पॉलिसी है. आर यू सैटिस्फाइड विद दिस पॉलिसी? इट इज आस्किंग. Walter says if the company is a growth firm, optimum DP ratio should be 0%. Optimum DP ratio should be 0%. First we calculate market price per share as per present policy of 60%. D is equal to rupees 3. E is equal to rupees 5. P is equal to D plus R by KE into E minus D divided by KE. D is 3 rupees. R is 15%. K is 0.125 into 5 minus 3 divided by 0.125. प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से प्रेजेंट जो 60% पॉलिसी अडॉप्ट करे वो हिसाब से इसका वैल्यू 43.2. If you multiply this, if you solve this, you'll get 43.2. This is the market price per share at the current dividend policy. What is the current dividend policy? 60% DPS. Are you satisfied with the current DP ratio? According to Walter, if R is greater than KE, it is a growth firm. So optimum DP ratio for a growth firm is 0%. अब वॉल्टर के हिसाब से दोनों को कंपेयर करना है R और KE में. If R is greater than KE, it is called a growth firm. और growth firm के लिए optimum DP ratio 0%. यहाँ पर R कितना है? 15%. KE 12.5%.
R is greater than K. R is greater than K. So it's a growth firm. For growth firm, the optimum DP ratio is 0%. तो वाल्टर कह रहा है कि ये फर्म के लिए 0% रखना, 0% रखे तो मार्केट प्राइस हाईएस्ट रहेगा, लेकिन 0% नहीं रखे, 60% रखे, तो इसलिए मार्केट प्राइस पर शेयर 43.2 कम है. अगर 0% कर दिए तो मार्केट प्राइस और बढ़ेगा. So according to Walter, if R is greater than K, it is a growth firm. So optimum DP ratio for a growth firm is 0%. Hence, we are not satisfied with the current dividend policy of 60%. करंट डिविडेंड पॉलिसी जो 60% है उससे हम सैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इससे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कम रहेगा. एट ऑप्टिमम डीपी रेशियो ऑफ 0%, earnings per share is 5 rupees minus 0. P is equal to 48. That's it. At optimum DP ratio of 0%, the market price per share is 48 rupees. Presently, जब 60% DP ratio है, तो market price per share comes to 43.2. At 60% DP ratio, it is 43.2. If we make optimum DP ratio of 0%, it is increased to 48 rupees. तो कंपनी अगर 0% DP ratio अगर रखता, तो market price per share और ज्यादा हो जाता, 48 होता. 4 problems we have done. Fifth problem. XYZ Limited earns rupees 8 per share. So we are given earnings per share. This is the fifth problem. Earning per share is 8 rupees. And its capitalized KE is equal to 10%, 0.10. It has 20% rate of return, 0.20. According to Walter's formula, what should be the price per share at 40% dividend payout ratio? According to Walter, P is equal to D plus R by KE into E minus D. When DP ratio is 40%. D is equal to 40% of EPS. D is equal to 40% of 8. Rupees 3.2. Plus R. R is 0.2. Divided by 0.1 into E. Earnings is 8 minus 3.2. Divided by 0.12. Therefore, market price per share is equal to rupees. So it comes to 128. 128 is the market price per share. Now, it is asking you what is the market price per share at the optimum payout ratio according to Walter's model. What is the optimum payout ratio according to Walter's model? In this case, the optimum payout ratio is 0%, since
R is greater than K. See, our internal rate of return is 20%, whereas cost of capital is only 10%. So R is greater than K. So in that case, the optimum DP ratio is 0%. The optimum DP ratio is 0%. D is equal to 0. Therefore, market price per share is P is equal to 0 plus 0.20 by 0.10 into P is equal to rupees 160. It's a growth firm. R is greater than K. So it's a growth firm. तो ग्रोथ फर्म के लिए ऑप्टिमम डीपी रेशियो 0%. अगर 0% रखेंगे तो 160. प्रेजेंटली अगर 0% नहीं रखकर 40% अगर डीपी रेशियो रखेंगे तो इट इज 128. Now see the sixth problem. ABC Limited earns rupees 6 per share. So sixth problem, EPS is equal to rupees 6. Capitalized KE is equal to 10% 0.10 and 20% R is equal to 20% 0.20. According to Walter's formula, what should the price at 25% DP ratio? According to Walter, P is equal to D plus R by KE into E minus D divided by K. Now, DP ratio is 25%. 25% of EPS. 25% of rupees 6 is equal to rupee 1.50. R is 0.20. At 25% DP ratio, what is